Yes. Okay, you know Taylor series, but you know how to find the value of y, right? I know Taylor series. I don't know. And okay, you also know how to find. No, I don't know how to find the value. Why? I don't think I do. Okay, I tell you. See, you have given what? dy by dx. As 0 is equal to 0, y0 is equal to 1. Okay, right? So this is what? Y dash. dy by dx is what? Y dash. Yeah. Okay. And this is what? Y0. This is already given. Now I am finding mm, y y dash is what? 3x plus y square. And y dash 0 means what? 3x0 plus y0 square. 3x0 is 0, y0 is 1. This is 1 actually, right? जब मैं y0 फाइंड करूंगा y dash 0, इसका मतलब ये हो जाएगा x0 और ये हो जाएगा y0, राइट? हाँ. नाउ y डबल डैश मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x का 2y. डेरिवेशन 1 and this is what 2y into y dash, right? Then y double dash 0 becomes what? Wait, 50. what x1 क्यों हो गया? Because with respect to x डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, हाँ. Okay. प्लस 2y0 y dash 0. So 3 into 2y0 is 1, y dash is also 1, 5, right? Y triple dash 0. Y triple dash 0 is what? Derivation of 3 is 0. Use UV rule. 2y y double dash plus y dash 2y dash, right? Yeah. Mhm. So y triple dash 0 becomes 2y0 y0 double dash 2y dash square. So 2y0 is 1, y double dash 0 is 5, 2 1 square. M plus 2. Wow. ओके, वैसे मैं और भी फाइंड कर सकता हूँ y4 तो y5, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था एटलीस्ट 3 नॉन जीरो वैल्यू ले लेना। ओके, आफ्टर दिस you can write what y is equal to by formula y0 plus x y0 is what 1 x y0 dash is 1 Wait, double 0 dash 5 is 5. and this is 12, right? Yeah. And so on. Take at least 3 power, okay?
जितना मैं ज्यादा लूंगा उतना ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगा। ओके। Mhm. नाउ पुट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y at x is equal to 0.1, right? 1 plus 0.1, 0.1 square, 0.1 cube into 12. Okay. Simplify this, you will get the answer. Understood? तो इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करो, यहाँ आंसर लिख दो। तो तुम्हें मिल जाएगा y at 0.1। यहाँ आंसर लिख लो कैलकुलेट करके। नोट डाउन Mhm. दिस। Okay. हाँ हो गया। Okay. So what is the final answer? 1.1। मैंने फाइनल आंसर नहीं देखा, मैंने तो just ब्रैकेट खोलना छोड़ दिया था। Okay, now simplify this and calculate the final answer. At least यहाँ तक कैलकुलेट करो। It is just 1.15। 1.15। Okay, 1. let me check. मैं 1.15 में तो वो पिन को बना। Alright, it's 1.127 there. Yeah, right. 1.12725. Right? Okay.
Do this question. Example number 7. Example 7. Yes.